Very good morning, students. Good evening, good afternoon. Good morning तो बहुत जल्दी हो गया था. I want you to be super thorough, starting this session with 1 by 60. Okay. Stand by. Let's just let everybody in. Okay, students, once again, very good evening. Students, please uh, ensure that as we are starting this session right now, uh, you need to be very thorough with this concept. You need to be very thorough with this concept, that is the applications. I had given you all a task. I have not yet got any submissions. So I don't know what you're waiting for. If you're done, please send. If you're halfway through, please send. Show it to me what you have done. And please ask if you have any questions. Jyotsna, Prerit, Muskan, Karishma, Chaitanya. Very good evening. Welcome. I hope you're keeping well. Good evening, Respect sir. to all these concepts. Very good evening. I wanted original examples. If the questions are good, then I would want others to discuss. I mean, solve and ask each other how challenging your questions are. You know, at one point in your education, if you reach to a point where you can make your own practice numericals that are at par with actual learning, then you know that, okay, wow, I have achieved a level of subject mastery in this. A level of subject mastery. Not exactly, I will say that you are the master, but I'll say, yes, a good level of subject mastery as it's required. I'm going to start the session with the solution of a few questions. And I would want you to set a timer of 90 seconds or maybe 120 seconds and just try to solve it within that period of time. Questions, anyone? Feel free to ask. Let me check if anyone else is joining. So, Prerit and Muskan, I have got your summary assignment. Very good. Jyotsna standing by, no problem. Let it get converted. Uh, Chaitanya has also sent it. Very good. I hope everyone can hear me. 5. Great.
I'm having that confirmation, right? TEA, CEA, applications of 1 by 60 used in determining TEA, CEA, TCA, used in finding range with respect to any radio instrument. Okay. Used in finding height and distance of aircraft. Okay. Charlie Bravo Delta. How do you read? Correction. Charlie Bravo Alpha. How do you read? 1 by 60 rule formula. Theta is equal to opposite upon adjacent into 60. Redu 5 Victor Tango Charlie Bravo Alpha. Okay, Chaitanya, good points, simple points, not very thorough. Expecting a little more examples were required. One numerical was required. Diagrams can be used. If you have given me 3 applications, I need 3 numericals which are missing. So why have you not made any questions and why just 4 lines in half an hour? Sir, it's half done. I was making questions. I was finding questions. Finding or making, I don't know. Is that all that you have submitted? So it's not enough. These are correct points, but it's not enough. Expecting more. This is just one line introduction. Can be done in 5 minutes. So what did you do for the next 20-25 minutes? And the numericals, you don't have to find students. You have to consider hypothetical situations. Try to make your own. Simple instructions. क्या है चैतन्य हुआ कोई क्वेश्चंस मिले तो भेजो मुझे. No problem. Sir. Better, please. You're required to do much better than this. Its formula 1 by 60. Its formula is theta is equal to opposite upon adjacent into 60, where theta can be more than 20 degrees. Class, public opinion. Can theta, is the rule applicable if theta is more than 20 degrees, or the rule is only applicable if the theta is 20 degrees or less? Sorry, sir. 20 degree or less. The writing mistake. I am Chaitanya, correcting right? in sending. Yes. Karishma, 20 degree less or more than 20 degrees? So 20-degree less. Very good. Prerit, be very careful what you're writing. Sir. क्वेश्चंस में नॉट और नॉट मिस हो गए तो हमारा ऑप्शन गलत मार्क हो जाएगा. कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, बट प्लीज कम ऑन स्टूडेंट्स, बैकअप. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑफ कोर्स बट वेल रिटन, बहुत कुछ है. इट फॉलोज सेक्सोडेसिमल सिस्टम 660 360. ओके, application of 1 by 60 R, we can find the following: track error angle, rate of descent referred to as height, distance to and from, glide slope. Distance to and from VOR, glide slope. Very good. Some questions. So 3 questions are given. For a glide slope of 4 degrees, range is 4 nautical miles, find safe height. Answer is also given. Very good. What approximate rate of descent is required in order to maintain a 3-degree glide slope at a speed of 90 knots? If these are the same examples that we have done in class, so you're required to make one more original question. If they're similar but different, then that's the whole point. You can just change the numbers and give me a different solution. Good with the answer. 2 airway QDM RMI shows range is not 90 nautical miles. How far you are from airway center line to which side? Very good. मिलता जुलता सा लग रहा है, बट अलग भी लग रहा है. I'm not sure. Whatever the case is, ठीक है. अच्छा क्या है? Good job, Prerit. ठीक है. Serves the purpose. Well, very good. Good, good, good. सिंपल है. बहुत कुछ है और जो ऐड कर सकते हैं प्रेरित. सारे पॉइंट्स ऐड नहीं हुए हैं, बट काफी कुछ ऐड किया है, so it's fine. Okay, chalo. We'll read. I'll be checking more and giving you all feedback.
Okay. जिनको फीडबैक मिला है काम करेंगे फीडबैक पे. Question. Practice questions and please set your timers. Very sincere and very seriously you have to do the questions. Okay, now these are trick questions. Question number 1 that you have to solve right now is of course based upon this only, and one of the applications that we have discussed with Chaitanya and Prerit's answer. So you all know you will be able to solve it, but make sure you are able to give the correct answer and also write the question number and just give me the correct answer. If you're not sure, cross check. Okay. Write down required track is 065 true. Okay. Aircraft flight path is 060 magnetic. Aircraft heading is 059er magnetic. Distance between departure and destination is 78 nautical miles. Reaching halfway at flight level 80, you spot a visual navigation aid on your right. Find the following. Distance of track error angle if any, correction angle to fly back to destination. Fourth, there is one more thing you'll have to find. Drift and note variation 3 degrees east as observed along the airway. Please note down the question carefully. Don't miss anything. If you want any help to understand the question, ask. One by one, find everything, gather all your answers, then submit. If you want to cross-check, feel free to cross-check with me. Couple of things, I might give you certain hints. I might not give you direct answers.
Anyone who is not understanding this question, you can raise your hand or you can text me, Zoom chat. What is happening in this question? You're required to follow a track 065. True. Why true? Because on our navigation charts, all directions mentioned are true directions. Remember this. So as per that, my required track is 065. In the end of the question, variation east. Variation east, magnetic least. So if my required track true is 065, my required magnetic track will be 065 minus the value of variation, that is 3. So my required track magnetic would be 062. So that is what I need to derive first. Using that required track 062 magnetic, my aircraft is tracking 060. So I know there is a 2-degree difference. So I'm off track by 2 degrees. Range is also given to me half of 78. So I can find the distance off track, whether I'm on left or right. It is given to me by saying that a visual navigation aid. So when you're doing a VFR, a low level flight during the daytime, you will be guided with respect to nav aids as well as visual references. That your visual navigation aid should be exactly below you. That means you're on the track, or should be about a nautical mile or so to your right. That means you're on track, or about a left, whatever the references are given to you. We don't do that much in CPL syllabus, but it is mentioned in your syllabus. It's good to give a read. All the questions don't come from that. But in reality, that happens. So what is happening in this situation? You're doing a VFR flight. You have your navids, but they've not mentioned anything about navids. So here, this is general flying at its core. This is how you find your path and you keep checking whether you're off track or not. How do you know you're off track? Because you have this information and you know you have seen the navid on your right. It means here the hint here is that if that is on your right, it means you are left off track. Because if the reference is on your right, the route could be on your right, it means you are left. So that is already there. Distance off track on the left, you are. So the question is not asking left. Options might ask left, right. Do not be confused because the navid is on the right, it means you are on the left. By how many nautical miles? If you are within 1 or 2 nautical miles, you know you are not off track. If you are 5 nautical miles or more that side, you know you are off track. So it becomes very important for us to keep checking also at times if we have differences in the required track and actual track of even 1 degree or 2 degree. If we don't focus, then we will keep going, drifting away. That drift is different. Now here there is another trick. They're asking us, what is your drift? Now drift, students who have not done it, it's a good time to do a refresher and ask for yourself. Ask yourself, your drift is allowed. Always remember. So here, my pilot had already corrected by 1 degree to the left. It means the wind was coming from the left. It means I would have drifted on the right. So it would be a starboard drift. This is how we learn to understand that drift. 1 degree starboard drift could be the answer in this case if we have got the directions right. Or it could be 1 degree port. Even by after allowing for the drift, I should have been on 062 magnetic. But I'm on 060. So with respect to 060, my heading 059er, that 1 degree is your drift. Do not compare your drift with respect to required track because you're not on required track. Some students might compare that drift with required track 062 and aircraft heading, and the difference would be 3 degrees. That would not be the drift then. Your actual track. So here they've just said flight path because flight path is the track traced by the CG. That's your actual. Just playing with words here. Wordplay. No, there's no instrument that measures your flight path. Your present track, which you see on your RMI, are like in yesterday's lecture you saw. So all of a sudden, when I'm explaining this to you, it becomes a very simple situation. Sir, मिल गया, distance off track भी मिल जाएगा, and then track error angle is equal to closing angle plus total correction angle is equal to total correction angle. मिल जाएगा, drift भी मिल गया, बचा क्या, हो गया. Error angle निकालना initially,
The track error angle obviously is just a simple math. 0.002 degrees is your track error angle, if you are wondering. Why 002? Because 065 is true while our actual flight path is magnetic. आप both way कर सकते हो, आप flight path 060 को भी true में convert कर सकते हो. तो वेरिएशन ईस्ट मैग्नेटिक लीस्ट. तो अगर आप 065 ट्रू ले रहे हो तो एयरक्राफ्ट फ्लाइट पाथ हो जाएगा आपका 062 ट्रू, ऐसा हो जाएगा. देन अगर ट्रू के हिसाब से आप कर रहे हो तो सारे डायरेक्शंस आपको ट्रू के हिसाब से सॉल्व करने होंगे फिर. अदरवाइज वी कन्वर्ट इट टू मैग्नेटिक ऑलवेज एंड देन सॉल्व, बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल फ्लाइट, सो यू वोंट हैव मच इंस्ट्रूमेंट्स. So yet I have not got any answers. ठीक है, सिखा दिया कैसे करना है. इसका आप एक डायग्राम बना लो. This will be your departure A, destination B. Total distance is 78 nautical miles. Halfway. Simple code, halfway. So 78 का half कितना हो रहा है students? 39 I guess. So this is 39 nautical miles. So my aircraft is traveling from here. So if this if the black is the route, the black pen is the route, then my aircraft has realized that it is here right now. Here, like this. So we need to find out what is this distance of. And my aircraft has actually been tracking this. So this becomes my TMG. And this here becomes my required track. So this is the track error angle here. The difference between the required track and the track made good. So aircraft actual flight path is the track made good. And the required track is already there with us. And then how do I find my correction angle? First, I find this angle. This angle is as good as the track error angle only through laws of trigonometry that you don't have to prove. Then you find out this angle. So the concept is same. You use the formula distance to go, you find the theta. Whatever theta you find here is the theta here. Again, the law of trigonometry that you don't have to prove. So you find two angles, add those two angles. One is the correction angle and the other is closing angle. Like this. So close into your destination. First correct your flight path, then close in. Together, these two are called total correction angle. All three things are found by 1/60 in this case. Sometimes you might be halfway, sometimes you might not be halfway, less than halfway, more than halfway, one and the same thing. So if I know my track error angle, this track error angle, if I can say it is 2 degrees. Why 2 degrees? Because required track is 0.65 true, variation east, magnetic least, right? So my required track magnetic would be 0.62 magnetic. Now I'm going to use this. My actual track right now, or my TMG that I can say track made good, is 0.60 from the equation. So my track error angle is equal to 2 degrees, the difference between the two. And my aircraft is on the left because the smaller angle TMG is on the left side. Whatever small number you have and a larger number you have with respect to 0 to 360, the smaller number will always be on the left. It's another shortcut to understand, which is also very logical when you think about the diagrams. So I know my track error angle. I know my range that I have been. I just need to find distance off. So this is track error angle. 2 is equal to distance off is the opposite that I need to find out in this particular triangle. So distance off is my x and distance from or distance traveled 39 into 60. This is what I do. (39 ×
into 2 divide by 60. How much do I get, students? I'm getting 1.3 nautical miles. Not a huge track error angle. Please cross check if you're getting the same answer. If not, let's correct it. So only 1.3 nautical miles in this case. Now, what should be my correction angle? What should be my closing angle? What should be my total correction angle? So first I will write total correction angle is equal to correction angle plus closing angle. Correction angle is as good as track error angle is equal to 2 degrees. You can calculate it, you will find the same thing. Closing angle is equal to theta is equal to distance of same formula upon. Now what we have ahead is distance to go, the distance left to travel in the diagram into 60. So if you look at the diagram over here, now my aircraft is here talking about corrections. The first correction will keep me parallel, which is as good as the track error angle, which is this angle 2 degrees. Now I need this correction also. And these are my track corrections, not heading corrections. In the end, I'll give you one more question. Find the new heading considering same drift. So the new heading to be maintained, or because the drift is 1 degree, you'll have to keep 1 degree only if the wind is same. So this TC I need to find out so that my aircraft can continue flying, don't make any right left turns, and automatically reach my destination. So this becomes the triangle now. So this is the distance to go, which is again 39 nautical miles. Distance off is the same, 1.3. So it's very important you find it correctly in the first place. If you don't find it correctly in the first place, then other questions, the answers will be wrong. Because if this is wrong now, then we have to use it as a base. All I need is this angle. And how do I get this angle? Because this angle and this angle as per trigonometry are the same. You don't have to explain that. You just need to know this angle correction I make here will be similar to this angle with respect to the triangle. This point if you miss that I'm explaining, then you'll always like, sir, ये होता कैसे है? अगर ज़्यादा सोचोगे तो, sir, angle तो मैं ये निकाल रहा हूँ, वो कैसे मिल रहा है मुझे? So I'll be like, okay, that's how the 1/60 is beneficial to us. You remember this point. If you forget this point, then you'll not know how to solve it. So, how much is my distance to off? A distance of 1.3, distance to go 39 into 60. A classic 1/60 formula with directly we need to find theta. Otherwise, cross multiplication कितना हो रहा था? So 1.3 divided by 39 into 60. 2 degrees is equal to 2 degrees. So my total correction angle is equal to 2 plus 2 is equal to 4 degrees. So wherever I am right now, 060 track and 059er heading. So if my present heading is 059er and I have to turn right, it means plus 4 degrees. So if I just correct my heading by 4 degrees, and if my new heading is 063 degrees magnetic, then I will be tracking 062 magnetic, which is as good as tracking 065 true. Considering 1 degree drift starboard. So I go back to my question. By making this correction, I am maintaining my aircraft on the required track, ultimately, without doing anything else, just by making the correction. As a pilot, after all these calculations, the final thing as a pilot, what would be to make that correction in your heading, or make the correction to your heading as per the available winds or zero wind.
Here we are assuming the same wind is impacting you. That's all. Do you understand the purpose of what you're learning and why you're learning this? These are not just theoretical papers. This is real life. In the exam, questions are based upon real life. This is why I say you're in the best field. All you have to do is just do hard work, follow instructions. So all answers right in front of you, and yet I have not got answers. Only Suchita, Jyotsna have sent me a few things, and only Jyotsna has given me answers actually. But question number भी mention नहीं है, कुछ भी thorough नहीं है students. क्या है ये सब? You had to solve it. You had to give me answers. 90 seconds, 120 seconds. क्या है answers? Match हो रहे नहीं हो रहे बताओ मुझे. Next question, I'm not gonna give you answers. किसी को कोई question से पूछो. Feel free to ask. Chaitanya, doubts? Yes, sir. हम्म. Sir, बताओ I'm क्या डाउट solving है. the last part I'm doing. बोलो क्या डाउट है कुछ. करिश्मा फॉलोइंग, प्रेरित फॉलोइंग, मुस्कान, ज्योत्सना, सुचिता, are we following? Yes, sir. Where's the energy, students? चैतन्य, चार्ली ब्रावो अल्फा, कोई ऑब्जर्वर मोड की जरूरत नहीं है भाई साहब. ये सब 3 दिन में आप पढ़ रहे हो, 3 दिन से. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच ओनली. जस्ट बिकॉज टीएमजी नहीं पता, रिक्वायर्ड ट्रैक तो पता है ना. टीएमजी भी आपको मैंने बता दिया. इट्स दी रॉन्ग ट्रैक दैट यू आर ओन, दैट यू आर ऑन विदाउट रियलाइजिंग. Or when you realize, when you are not on track, how do you realize? You realize either when your nav instruments show it to you with respect to how we studied in the last class, or with respect to the ground nav aids also. तो टीएमजी अगर नहीं पता तो पूछ लो टीएमजी क्या है, बाकी सब आपने पढ़ा है. ये एक कॉन्सेप्ट डायरेक्टली नहीं बताया 1/60 में, जो आज हम इनडायरेक्टली कवर कर रहे हैं. नहीं समझा पूछ लो ना, पूछने बोल रहा हूँ मैं. हो गया ये टॉपिक, कुछ बड़ा है नहीं. आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछो मुझसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आंसर्स. नहीं सर, ऐसे बहुत टर्म्स थे, जैसे वेरिएशन हुआ, ड्रिफ्ट हुआ, एरर एंगल हुआ, तो ऐसे कुछ एरर टर्म्स थे एंगल जो। भी बता दिया, ड्रिफ्ट भी बता दिया, वेरिएशन बता दो ना. वेरिएशन इज द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड द ट्रू नॉर्थ मेजर्ड फ्रॉम ट्रू नॉर्थ. ट्रू नॉर्थ पोल एक फिक्स्ड पोजीशन है. जियोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग्स, मैप, सबके लिए हम वही यूज करते हैं. बट अर्थ का जो नेचुरल नॉर्थ पोल है उसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं. वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक जगह पे नहीं रहता. इट चेंजेस इट्स पोजीशन एनुअली, और प्रोबेबली एवरी 10 years, एवरी सेंचुरी. तो उसको हमें स्टडी करना पड़ता है वो कहाँ पे है. जहाँ पे वो होता है चार्ट्स हम अपडेट करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ द टू नॉट्स मेजर्ड फ्रॉम ट्रू नॉर्थ इज वेरिएशन. अगर वो राइट में है तो वेरिएशन ईस्ट हो सकता है, लेफ्ट में है तो वेरिएशन वेस्ट हो सकता है. अब आपको जो ये वेरिएशन और जो डायरेक्शंस हैं, ये सबसे बेस चीज है. तो आप क्या करोगे चैतन्य, आज ये सेशन होने के बाद प्लीज मैसेज मी. कॉल तो पता नहीं कब करोगे आप, वेट ही कर रहे लगता है आप मेरे कॉल का. आपको करना चाहिए फटाफट. एंड डायरेक्शंस यू स्टार्ट, आई मीन यू स्टार्ट विद डायरेक्शंस. उसी में आपका वेरिएशन डेविएशन हो जाएगा. आज या कल के बीच में कर लो, आपको बहुत फायदा होगा. ये सेशन आधा तो अपने आप ही समझ आ जाएगा आपको. तो रिमेंबर टू डू दैट. करना है सब कुछ आगे जाके, तो अभी वेट क्यों कर रहे हैं अपन, राइट? एंड प्लीज, अभी आप 4 क्लास अटेंड कर रहे हो तो ऑब्जर्वर मोड की जरूरत नहीं है. आधा आ रहा है तो आधा तो पढ़ लो कम से कम. पूरा दिमाग में ऑब्जर्वर मोड रखोगे ना, आधा भी नहीं पढ़ोगे. इससे अच्छा कुछ और जाके काम कर लो फिर. जब अभी बैठे हो तो पूरा पढ़ लो जितना आप पढ़ पाओ. बाकी वैसे तो कोई क्वेश्चंस पूछ नहीं रहा है तो तुम पूछ लो ना. ठीक है, ओपन माइंडसेट रखो. ऐसा ट्राई करो जो बोला वो समझने को, और देखो 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या. स्मार्ट, राइट? लेट्स यूज द स्मार्टनेस.
करिश्मा, ज्योत्सना, डाउट्स? Negative, sir. मुस्कान, are you following? Suchita? But Chaitanya, I appreciate how you're sharing. But just push yourself. Go with what I'm saying. Just push and see how it feels. Excuse me, sir. Yeah, Chaitanya. सर ये ट्रैक एरर एंगल हमारा 065 ट्रू से हमने 3 डिग्री वेरिएशन माइनस किया तब आया। क्या बोल रहे हो? सर जो हमारा ट्रैक एरर एंगल है 2 डिग्रीज वो हमारा 065 ट्रू से 3 डिग्री वेरिएशन हमने सब्ट्रैक्ट किया तब आया। नहीं, वो तो वेरिएशन होगा ना, वो तो वेरिएशन माइनस कर रहे हैं। वेरिएशन क्यों माइनस कर रहे हैं 065 से? ताकि मेरे को मैग्नेटिक ट्रैक मिला है। क्यों? क्योंकि मेरा एयरक्राफ्ट भी मैग्नेटिक ट्रैक पे है। तो अगर ट्रैक एरर एंगल में निकालूंगा तो मेरा रिक्वायर्ड ट्रैक भी मैग्नेटिक होना चाहिए, प्रेजेंट ट्रैक भी मैग्नेटिक होना चाहिए। वहां ट्रैक एरर मिल रहा है मुझे। तो मेरा मैग्नेटिक ट्रैक क्या है रिक्वायर्ड, वहां के लिए मुझे वेरिएशन ऐड करना है। तो 065 माइनस वेरिएशन गिव्स मी मैग्नेटिक रिक्वायर्ड ट्रैक मैग्नेटिक। वो क्या है? 062। मेरा एयरक्राफ्ट क्या ट्रैक कर रहा है? 060। सो रिक्वायर्ड ट्रैक क्या है? 062। ट्रैक मेड गुड क्या है? 060। सो ट्रैक एरर एंगल इज द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर्ड ट्रैक एंड ट्रैक मेड गुड। तो क्या होगा मेरा ट्रैक एरर एंगल वहां पे? 2 डिग्री। तो आप क्या कर रहे हो? आप दो चीज को फिर से मर्ज कर रहे हो। मर्ज नहीं करना, पहले वेरिएशन सॉल्व करके मैग्नेटिक ट्रैक निकालो, फिर मैग्नेटिक ट्रैक से ट्रैक मेड गुड को सब्ट्रैक्ट या माइनस प्लस करके जो भी एरर आ रहा है एंगल में डिफरेंस, वो ट्रैक एरर एंगल हो गया आपका। स्टूडेंट्स, दिस इज जस्ट लाइक कन्वर्टिंग थिंग्स टू प्रॉपर यूनिट्स। जैसे हम बोलते हैं ना, वो हमारा आरओडी में जो फॉर्मूला है ग्लाइड स्लोप हाइट का, उसमें हाइट फीट में होती है, रेंज नॉटिकल माइल में होती है। वहां तो हम कितने ध्यान से यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? तो ट्रू डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक डायरेक्शन आर जस्ट लाइक ट्रू टू डिफरेंट यूनिट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो आपको या तो ट्रू से मैग्नेटिक करना होता है या मैग्नेटिक से ट्रू करना होता है, सेंस लगाना होता है आपको। इसीलिए वेरिएशन डेविएशन ज्यादा डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है, इनडायरेक्टली पूछा जाता है। पहला कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देंगे आपको ना, उसमें वेरिएशन डेविएशन भी डाल देंगे, आपको लगेगा अरे यार ये तो 2 लेवल का क्वेश्चन हो गया मेरा। चैतन्य, आपको 3 क्यों आ रहा था, 2 क्यों नहीं आ रहा था? तो आप ट्राई करें एंगल क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, दोनों में कोई कंफ्यूजन है आपको? ठीक सर, अब ठीक हो गया। क्या कंफ्यूजन है बताओ, दोबारा से आएगी और शायद हमेशा से थी। डिस्कस। ठीक तो अभी सर हो गया है लेकिन वापस आ डेफिनेशन गया। भूल गया सर, थोड़ा पहले पहले पढ़ा था ना। क्या भूल गया डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ ट्रैक एरर एंगल, द व्हाट इज द एंगल बिटवीन व्हाट एंड व्हाट। बताओ मुझे, व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? ट्रैक मेड गुड एंड the track error angle is the angle between TMG and the track, the new track. टीएमजी और न्यू ट्रैक एक ही चीज है चैतन्य। स्टडी करो ना 5 मिनट, फिर जवाब दो, पूछो क्वेश्चंस, बैठ के पढ़ो वहां पे। क्या कर रहे हो तुम? पढ़ नहीं रहे हो, आधा आधा सुन रहे हो सिर्फ। 1 minute sir. स्टडी करो या टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, आई एम हियर। चैतन्य, तुम्हारा क्या चल रहा है? समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? प्रेरित, Which one, sir? Which one? अभी तुमसे ही बात करूंगा ना, अभी ऑब्वियस है ना, चैतन्य का हो गया सब कुछ, वो स्टडी कर रहा है। मैं बस सुन रहा हूँ सर आपका, बस में क्या चल रहा है वो क्वेश्चन में मैं 10 बार पढ़ रहा था, क्या हो गया? अभी आया समझ में, इतना मैंने आपको लेक्चर दिया उसके बाद? हाँ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा? बस फिर भी बेसिक्स थोड़ा और मुझे करना है वो सब वापस जाके। ऑफ कोर्स बहुत करना है, बहुत करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है तुम ये नहीं समझ पाओगे। देखो, ट्रू नॉर्थ है ना, ऐसा ये सिंबल है ट्रू नॉर्थ का, एक एरो एंड ए फुल डायमंड। ट्रू नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ का सिंबल होता है ऐसा, हाफ डायमंड बोलते हैं इसको, हाफ। कई जगहों पर आपको ये ऐसा भी मिलेगा, सिर्फ ऐसा, ये मैग्नेटिक हो गया। और ऐसा मिल रहा है तो ट्रू हो गया। ये जो पॉइंटर है, ये एरो हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करता है।
कोई भी navigation chart हम देखते हैं, students, this is for everyone, right? Whatever navigation charts we look at, they will mention where the north is. In India, we'll generally see straight north because India is very well put on the globe. North is mostly straight in all areas of our country. When you go to the northern areas, where you go to major airports in northern areas, your north will not always be straight. Your north could be a little twisted to show you that where exactly north is. Okay? But lucky for us, बचपन से लेके अगर इंडिया में रह रहे हैं तो हमें यही नॉर्थ दिखेगा सब जगह पर. Irrespective of this, ये हमारा ग्लोब हो गया, right? On the globe, if there is one North Pole which is fixed, I can say this is true North Pole. And the magnetic North Pole could be anywhere. It could be here or anywhere else, but it would be in one place at one point in time. Now, what happens if my aircraft is here? With respect to this aircraft, my true north is straight, okay? But my magnetic north is here, like this. So this aircraft here, somewhere on the equator, तो ये जो डिफरेंस है ना ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ का, ये डिफरेंस को वेरिएशन बोलते हैं. एंड डिफरेंस इसीलिए है कि सारे चार्ट्स में डायरेक्शंस ट्रू नॉर्थ होते हैं, बट मैग्नेटिक नॉर्थ हमें मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ ही देता है, विच इज आवर स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट और स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसीज. और बेसिक फ्लाइंग में वही यूज होता है, लाइक बेसिक लाइक ऑर्गेनिक फ्लाइंग. सो दैट इज वेरिएशन. इन अनदर प्लेस एक एरोप्लेन यहाँ पे ऐसी है, लाइक डायगनली, ओके, ऑन दिस साइड. फॉर दिस एयरक्राफ्ट ट्रू नॉर्थ is here, magnetic north is here. Again, the same relationship, right and left, right and left. On the opposite side, people will have magnetic north to their right and true north to their left. For them, the variation will vary. So, although magnetic north is just one point in the world at one point in time, but different aerodromes and different charts will have different variations mentioned, so that the flying pilot, if following magnetic directions or magnetic instruments, can deduct or add the variation value in the value of true directions followed on the chart. So the same can be followed on magnetic compass. In case you are using magnetic compass for references. Why do we use magnetic compass for references? Because the North Pole is natural and that is the only natural source of a fixed thing. How do we know? Because a magnetic compass is made of a magnetic needle, and the magnetic needle is attracted. The south pole of the magnetic needle is attracted to the north pole of the earth, as in it points to the direction of the north. From there, if we measure angular clockwise, we get directions 360 degrees, where 90 degree east, 180 degree south, 270 west. और है ही क्या, ये सब पढ़ते हो आप लोग शुरू के 9 लेक्चर्स में, लाइक शुरू के 5-6 लेक्चर्स में. मुस्कान, गुड जॉब. ड्रिफ्ट नहीं लिखा स्टूडेंट्स, न्यू हेडिंग नहीं लिखी किसी ने. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज न्यू हेडिंग? तो गुड. चैतन्य, आंसर्स तो आपने दिए बट बिना समझे दिए हैं. मेक श्योर समझ आए आपको, और ड्रिफ्ट नहीं दिया था आपने. करिश्मा, गुड जॉब. कोई डाउट्स नहीं पूछ रहे हो, आंसर्स दे रहे हो, गुड. चैतन्य, हो गया रिफ्रेशर आपका? चार्लिया होटल अल्फा, Yes, sir. बताओ मुझे, एक्सप्लेन करो जल्दी. क्या एक्सप्लेन करूं? ट्रैकमेट गुड, ट्रैक कर रहा हूं. आपने जिस सवाल का जवाब गलत दिया था लास्ट, उसी को दोबारा आपको आंसर देना है. दैट्स व्हाट यू वर स्टडिंग. या Sir, our required track was 065 and the variation was 3 degrees east. So east is least. So our magnetic track would be 062. magnetic track would be 062. 062. Okay. Yes, sir. तो सर उस पे वेरिएशन लग जाएगा. सॉरी, ट्रैक एंगल would be 2 degrees. 2 डिग्री कैसे आ रहा है ट्राई कर एंगल? तो 060 जो पहले दिया था हमें फ्लाइट पाथ, और उसमें से 062 जो मैग्नेटिक ट्रैक आया. तो क्या है ये दोनों चीजें? 062 क्या है, 060 क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज तो कर? 062 is the TMG.
062 TMG है या 060 TMG है? 062. रिक्वायर्ड ट्रैक मैग्नेटिक क्या है? So 062 is the track main pole. So what is required track magnetic? 060. What is required track true? 065. So what is required track magnetic? 062. So what is track made good? 060. तो पहले उल्टा क्यों बोल रहे थे? Sorry, sir. सॉरी नहीं, सॉरी से मेरे को क्या मिलेगा? क्यों बोल रहे थे? लेट्स फिगर इट आउट। इतना पढ़ने के बाद भी गलत क्यों बोल रहे टर्म थे? नहीं पता थी शायद. क्या नहीं पता था? क्वेश्चन में नहीं लिखा रिक्वायर्ड ट्रैक ट्रू 065, जिससे आपने डिराइव किया है 062 मैग्नेटिक, तो वो भी रिक्वायर्ड ट्रैक मैग्नेटिक हुआ ना, उसको टीएमजी कैसे बना दिया? ठीक है सर, समझ गया. और 15 मिनट पहले मैंने बोला है फ्लाइट पाथ इज या एक्चुअल फ्लाइट पाथ इज नथिंग बट योर ट्रैक मेड गुड, वो पॉइंट वहां क्यों नहीं पकड़ी आपने? टर्म आ जाता ना तभी भी आपको, जब मैंने रिफर किया। कहाँ ध्यान, कहाँ है आपका? एरर कहाँ पे आ रहा है? बहुत जरूरी है ये एरर पकड़ना यार, तुम्हें पढ़ी नहीं है क्या? एग्जाम में कंफ्यूज हो गए तो क्या कर रहे हो आप कंफ्यूजन बचाने के लिए? बताओ मुझे। नहीं सर, ऑल क्लियर. अरे क्लियर की बात नहीं है, ऑल क्लियर में तो दिमाग क्लियर लग रहा है मुझे। मैं पूछ रहा हूँ व्हाई इज द कंफ्यूजन अराइजिंग, वेयर आर यू कंफ्यूज्ड ऑन द कॉन्सेप्ट? टेल मी सो आई कैन टीच यू। नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं ना, टीसीए मतलब अरे कंफ्यूज. बहुत सारी में क्या ही चीजें हैं? बोलो टीसीए क्या है, बोलो टीसीए के बारे में। व्हाट इज टीसीए? करेक्शन एंगल करेक्शन एंगल. प्लस क्लोजिंग एंगल। बोलो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, बताओ। बहुत सारी चीजों से क्या हो जाएगा? बहुत सारी चीजें तो एग्जाम देने नहीं जाओगे। प्लेन में बहुत बटन है, मैं नहीं उड़ाऊंगा। क्या है बहुत सारी चीजें? कंफ्यूजन क्या है बोलो? टीसीए में क्या कंफ्यूजन है बोलो? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसे एग्जांपल तो दे. बोलो। नहीं, आप मेरे को बोल रहे हो प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या मैं आपको फिल इन द ब्लैंक दे दूं, वन लाइनर, सारे डिजीजे को बोलूं ऐसे पेपर बना के दो? नहीं, नहीं. राइट? ऑब्वियसली दैट्स नॉट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, आई नो। सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? बोलो। बहुत सारी चीजें हैं टीसीए। कैरी ऑन, क्विक। one thing you say, I'll help you clear it quickly and you study it. Come on, everyone is waiting. नो सर, आई अंडरस्टूड सर, मतलब एग्जांपल दे रहा था. हाँ, और बोलो कहाँ कंफ्यूजन क्यों हो रही है? फटाफट सोचो सोचो। कंफ्यूजन नहीं है सर. Students, TMG is 090 true. Okay. Track error angle is 005 degrees left. Find required track. True. Give me your answers. Muskan, tell me what's on your mind. सर, इससे पहले जब हुआ था ना, तो आपने टीसीए का फॉर्मूला दिया था टीईए प्लस सीए. तो करेक्शन एंगल इज इक्वल टू ट्रैक एरर एंगल ओनली, राइट? अभी बताया ना ऊपर। करेक्शन एंगल एंड ट्रैक एरर एंगल आर वन एंड द सेम, बट जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको ट्रैक एरर एंगल नहीं बोलते हैं, हम करेक्शन एंगल बोलते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ द फॉर्मूला टू मेक योर कैलकुलेशंस क्विक, यू सिंपली कॉपी पेस्ट द टीए ओनली ओवर देयर, दैट्स व्हाई वो फॉर्मूला दिया है आपको इजी बनाने के लिए। बट एक्चुअली सीए इज करेक्शन एंगल and correction angle is equal to track error angle only. They are trigonometrically the same. So it's one and the same only. It's not wrong. You need to know both, and कहीं ना कहीं दोनों आपको formula दिए हैं which are the same only. So make sure, Muskan, there's no difference. Instead you can say sir CA TE की वैल्यू सेम ही होगी, राइट? तो फॉर्मूला में टीए आएगा। मैं बोलूँगा फॉर्मूला में टीए मत लिखो, फॉर्मूला में सीए लिखो, और सीओ के पास लिखोगे सीए इज एज गुड एज टीए ओनली, सिमिलर टू टीए। तो फॉर्मूला करेक्ट कर लो फिर। बट फॉर्मूला में अगर कोई टीए दे रहा है और पूछा है सही है कि नहीं, और सीए नहीं है मेंशन दूसरे ऑप्शंस में, तो टीए करेक्ट ही होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू सी। इफ यू नो सीए एंड टीए आर गोइंग टू बी द सेम। सो यहाँ पे थोड़ा सा वो बोल रहे हैं ना, मैं जो बोल रहा था आपको एविएशन का, वो डुअलिटी नेचर का है, पैराडॉक्स। बट यू बी वेरी
clear about it. मुस्कान, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Affirm, sir. It's one and the same one, yeah. You're right. T ये लिखा होगा, सही लिखा होगा. One and the same. Karishma, very quick to give me question number 2. प्रेरित को question number 1 था. Karishma and Chaitanya, your answer is wrong. Question नहीं read कर रहे हो ध्यान से. I don't blame you, but भाई एग्जाम में ध्यान रखना है यार. सामने सामने क्वेश्चन है यार. चलो दोबारा से ट्राई करो. क्या मिस्टेक है फाइंड आउट करो. But at least you have been very quick in answering. Karishma, hats off with the speed. Chaitanya, good speed. Picking up, very nice. Jyotsna, good job. Very good job, Jyotsna. लेकिन ज्योत्सना ट्रू नहीं मेंशन किया आंसर, बट ठीक है, क्वेश्चन में ट्रू था. चार्ली ब्रावो अल्फा, ट्राई करो आंसर. सामने सामने है, अभी तो सिखाया. ट्रैक एरर एंगल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड ट्रैक प्लस माइनस ट्रैक मेड गुड. अभी ये अगर मैं सिखा दूं ना आपको, इसमें इतनी कंफ्यूजन होगी ना, तो स्टूडेंट्स मगअप करने लगते हैं. स्टूडेंट्स गो टू मग थिंग्स अप. कुछ नहीं याद रहता एग्जाम में, फिर रॉन्ग करके आता है. तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ. रिक्वायर्ड ट्रैक माइनस TMG व्हेन aircraft left of track. That is, TMG is left of required track. And required track plus TMG तो क्या ही होता है. प्लस TMG करके कोई आपको इतना बड़ा एरर एंगल नहीं मिलेगा. मतलब मेरा रिक्वायर्ड ट्रैक 09 और 0 है, TMG 09 और 5 है, तो दोनों को क्या मैं प्लस करूंगा? तो एक्चुअली हमेशा डिफरेंस ही होता है, प्लस आता ही नहीं है यहाँ पे. बट वो प्लस माइनस आपको राइट लेफ्ट में हेल्प कर सकता है. बट राइट लेफ्ट तो उसके पहले ही हमारे लिए ऑब्वियस हो जाता है. तो देखा जाए तो कंफ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए. So we don't go with this. We know track error angle. What we go with is track error angle is angular difference between required track and track made good. Okay. चार्ली ब्रावो अल्फा, एक्नॉलेज तो करो. यू कैन से सर नहीं समझ रहा है, बुरा नहीं मानना है. आई एम जस्ट पुशिंग यू. आप तो अच्छा है, आप अटेंड तो कर रहे हो कम से कम. बट बात तो करो. अभी जवाब दिया, नाम लिया तुम्हारा, फिर भी चुप बैठे हो. हाँ सर, ऐसे ही करके स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज पता होगी तो फिर मैं अप्रोच कर पाऊंगा क्वेश्चन पे. अबे भाई, ग्लास एम्प्टी 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 सुन के थक गया. ग्लास कितना फुल हुआ है उसकी बात करो ना. What I'm हाँ सर, trying to say is, आई वांट जो दिस. समझ आया उसके ऊपर बात करके देखो ना. सर थोड़ा समझ रहा है, इतना सर समझ रहा है, कुछ तो समझा होगा. लेट्स टॉक अबाउट दैट ना. सीधे जवाब में सर बाकी बचा है वो पढ़ूंगा तब आएगा. अरे अभी क्या पढ़ा है उसकी बात करो. हाँ करो सही है, करो. ये तो समझ आ गया. तो क्या जीरो क्या नाइन समझ और आया फाइव बताओ. आएगा क्या? रिक्वायर्ड ट्रैक फिर 09 और 5 होगा. तालियां. सबको दे दिया आपने आंसर. यस, आ गया ना आंसर करेक्ट. कितना टाइम लगा? वेरी गुड. लेकिन ये सही है चैतन्य, मेरे सवाल पे तुम मुझे ही सवाल पूछ रहे हो, जवाब तो तुमने दिया नहीं है. यू थिंक आई लेट यू गो? क्या पढ़ा भाई, एक्नॉलेज तो करो. टॉक टू मी, एक्नॉलेज कि हाँ सर ये समझ आया मुझे. 0985 तो क्या पता चला तुम्हें कि मेरे को 0985 पे होना था, ये पता चला. अब मेरे को 0985 पे जाने के लिए करेक्शन एंगल निकालने पड़ेंगे, ये सीखा.
ताकि मैं ऑफ ट्रैक ना हो जाऊं, ताकि मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं नो मैटर व्हाट हैपेंस इन फ्लाइट। ये सीखा। ये सब मैं नेविगेशन में सीखता हूँ, और इस सब को जनरल नेविगेशन बोलता है। ऐसे ऐसे भी अगर आप सोच लोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। आप ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं भी जाओगे, प्रैक्टिकली भी अप्रोच दोगे तो आपको जो फील आनी चाहिए फिर। आई वॉन्ट यू टू फील योर लाइफ चेंजिंग इन दिस वीक। ज्योत्सना, मुस्कान, सुचिता, करिश्मा, डाउट्स? प्रेरित भाई साहब, आपको पता ही चल गया होगा आंसर रॉन्ग है। 085। चैतन्य, व्हेन आर यू गिविंग मी अ करेक्ट आंसर, यू नॉट बॉदर टू गिव मी करेक्ट आंसर। वैसे तो मैंने पहले सही दिया था, फिर उसके बाद कंफ्यूज हो गया, तो फॉर्मूला मैंने वैल्यू अलग अलग रख दी उसकी वजह से। बच्चा, यही तो प्रॉब्लम है ना। ये सब नहीं होना चाहिए। तुमने पहले जो दिया वो आंसर आया भी नहीं हमारे पास। देखो स्टूडेंट्स, ट्रिक क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। हमें ध्यान कहाँ देना है मैं बताता हूँ। ट्रैक एरर एंगल इज ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब दो लाइन ऐसे कभी भी बना लो आप। ट्रैक एरर एंगल लेफ्ट में जा रहा है, मतलब मेरा टीएमजी भी लेफ्ट में है मेरा। ऐसा सोच लो, मेरा ट्रैक एरर एंगल लेफ्ट में जा रहा है, तो मेरा टीएमजी हो गया 098 0। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, लेफ्ट वाले डायरेक्शन छोटे होते हैं, राइट वाले ज्यादा होते हैं। अगर आप लेफ्ट में हो तो ये जो आपका रिक्वायर्ड ट्रैक है वो तो राइट में ही हो गया ना आपके। एंड बाय हाउ मेनी डिग्रीज? 5 डिग्रीज। तो राइट में कोई भी डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ सेक्साडेसिमल सिस्टम मेजर क्लॉकवाइज। समझो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो अभी मैंने चार्ली ब्रावो अल्फा के लिए सबको बताई। डायरेक्शंस आर मेजर्ड फ्रॉम रेफरेंस नॉर्थ क्लॉकवाइज। 90, 180, 270, यहाँ पे भी वैसे ही होता है। तो आपको पता चलता है माई आर टी इज ऑन द राइट ओनली, तो 5 डिग्री राइट में मेरे क्या ही होगा, 090 के राइट में 5 डिग्री क्या ही होगा, 095। वो हो गया मेरा आर टी। 095 डिग्री। ट्रू, सारे ट्रू में है। वेरिएशन की कोई टेंशन ही नहीं थी, इसलिए वेरिएशन दिया ही नहीं। मैं दे देता वेरिएशन तो शायद तुम कुछ गलत कर देते, ऐसा था। समझ रहे हो चैतन्य? तो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हुई बताओ? इट्स समथिंग वेयर वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। यहाँ कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे सबको। प्रेरित, ज्योत्सना, करिश्मा, मुस्कान, चैतन्य, सुचिता एंड चैतन्य। तो बताओ चैतन्य, कहाँ थी कंफ्यूजन? टॉक टू मी। सब लोग अपने आंसर्स करेक्ट कर दो, हाँ चैट पे क्वेश्चन नंबर लिखना है। प्रेरित, क्या हो गया भाई? एक चीज आ रही है तो दूसरी चीज नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर लिखो वहां पे। चैतन्य, टॉक टू मी। चार्ली होटल अल्फा। यस सर। टॉक टू मी मतलब अब भी। क्या थी कंफ्यूजन? सर कंफ्यूजन एज सच नहीं थी। यार, कंफ्यूजन थी इसलिए रॉन्ग हुआ। अब जब मैं पूछ रहा हूँ तो बोल रहे हो कंफ्यूजन नहीं है। जब मैं पूछता हूँ डाउट है तो तुम बोल रहे हो डाउट नहीं है। फिर जब रॉन्ग क्वेश्चन देते हो तो बोलते सर डाउट था। भले सेम वर्ड ना यूज करो, बट वी गेट द जिस्ट राइट। क्या चल रहा है ये? क्या टेबल टेनिस चल रहा है क्या? बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है भाई? अभी बता रहा हूँ ना मैम। अरे, ये सही है। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोले बेटा प्रॉब्लम क्या है बताओ, नहीं बताओगा। आप डॉक्टर, आप ही पता करो। अरे, कुछ नहीं तो सर। बताओ, कुछ तो बताओ। अरे नहीं, आप ही पता, आपने इतनी पढ़ाई की, आप ही बताओगे। अरे ठीक है भाई। डाल दो सारे टेस्ट, 2-3 लाख लगेंगे, पहले तो टेस्ट करा लो सारे। बच्चा बोला पता करो, मुझे भी इसी का टेस्ट करो। एनीवे, जोक्स अपार्ट, बोलो चैतन्य, क्या बोल रहे हो? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्रैक मीट गुड वुड बी इन आवर लेफ्ट साइड, सो दैट्स व्हाई रिक्वायर्ड ट्रैक वुड बी ऑन द राइट, तभी वो 095 हुआ। ये समझ में आया। हम्म, ठीक है, चलो लेट्स सी। रिक्वायर्ड ट्रैक स्टूडेंट्स, 3, 5, 7।
Sir, you are on mute. रेडियो 1 विक्टर टैंगो चार्ली ब्रावो अल्फा। अरे हाथ दिखाया ना तुम लोग को, क्या इतना घाई हो रहा है यार? जब डाउट्स पूछता हूँ तब तो बैठे रहते हो। मेरे को पता था म्यूट पे, मैंने ही खुद रखा था। आई शोड यू ऑल माय हैंड आल्सो, बट थैंक यू स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स म्यूट पे था मैं, तुमको सुनना है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी को भी नहीं ना, बट आई लाइक दैट। ठीक है ना, हाथ दिखा रहा हूँ ना। एग्जाम सेशन चल रहे हैं, यू नीड टू बी बकअप, ओके? यू नीड टू बकअप, नीड टू बी भी क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है चलो, तो चैतन्य एंड चैतन्य, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट इट। अगर आप लोग नहीं बोलो, जनरली बाय मिस्टेक म्यूट हो गया तो 30 मिनट, एक बार तो 15 मिनट मैंने सेशन दिया, किसी ने बोला ही नहीं, फिर पता चला म्यूट पे था मैं। अब मैं खुद भूल गया मैंने क्या बोला। So required track is 357. Okay. Track error angle is 08 degrees. Okay. 008 degrees. Aircraft is right of track. Okay, right of track. Find TMG. Answers in the chat box quickly. ट्रैक है Required track is 357. Track error angle is 002. Find TMG. Aircraft is right of track. A trick question, but simple and similar to that. सब correct answer देने चाहिए question number 3 लिख के in the Zoom chat. Whoever is not having access to Zoom chat, you will send it on WhatsApp. Jyotsna, I hope, no doubts, you're strengthening this topic. So students, I'll be sending your students answers. Okay, good. Got it. Got it. Checking. चैतन्य बोलेंगे यार ऐसे कौन बात करता है? चैतन्य ऐसे कोई नहीं बात करता है, कभी कभी करता है बस। करिश्मा, think about it. Direction students can only be between 0 to 360 degrees. I can never have a value more than 360. Put on your logic hats and try to use logic and give me the answer. आएगा answer आएगा. Suchita, I think right and left is a confusion in this case. Muskan, I just said what I said earlier. Directions can only be up to 0 to 0 to 360. Chaitanya, Charlie Hotel Alpha, very, very, very good. Very good. Thank you, sir. Jyotsna, very good. Chaitanya, again, very good. Charlie Bravo Alpha. सीख गए यार तुम तो एक ही दिन में. Prerit, very good. Yes, Karishma, that's the technique. See, that technique can help you easily directly get the answer. So students, if you're doing the plus minus, if you're getting anything above 360, just subtract 360. Whatever you get is your final answer. Very happy to see the use of that technique. Very good. Muskan, wonderful job. Cheetah, very good. The students who gave me incorrect answer,
what's the confusion? Do you want to talk about it? Or you want to just say it's a silly mistake? What's the case? I Yes, took Suchita. inbound. Inbound. Yeah, like I made the What do you required mean by track. inbound? Uh-huh. So see, Required whatever you track. take just one line. See, students, I'll show you accuracy also. You make a plus, you make a cardinal points, 090, 180, 270. And required track 357 is of course this right now. Okay, you can say this direction. Anywhere if you go in this line, anywhere, this will always be your 357 required track. Okay. Suchita, say, what is the confusion? I'll continue it after you're done. So, sir, the required track, the arrow that you're taking it forward, I took it on the other side. And I thought the aircraft is tracking 357, but I did not understood that it has to be tracking 357, and I just took it in the opposite side. Required track. Required track means my airway, nothing else. Required track. I need to be on this. Track made good is the track that I am on, which is not the required track. If you have no track error angle, your required track made good are one and the same numerically because there's no track error angle. So the inbound outbound QDR QDM is not related here. Here, even if I don't make angles or arrows exactly, see this clockwise measurement, this is 357. That's why this angle direction I get 357. Now my track error angle is how many degrees? Is approx 8 degrees. Aircraft is right off track. So this is the required track. My aircraft is on the right. Off track, right. By how many angles? Or by how many degrees? By 8 degrees. So this is how I plot it. So what is my actual track? Whatever I have been flying right now was my actual track like this. This line is my actual track. The more I go away, the more farther the two lines become. And it goes like this. ऐसे ऐसे हो जाता है इसलिए जितना जल्दी आप ऑफ ट्रैक देख लो कितना डिस्टेंस है उतना जल्दी आप तुरंत वापस आ सकते हो तो सुचिता व्हाट हैपेंड व्हाट वर यू प्लॉटिंग डिड यू नॉट अंडरस्टैंड दिस कि आप यहाँ हो एयरक्राफ्ट राइट ऑफ ट्रैक 8 डिग्रीज सो 357 प्लस 008 3 डिग्रीज तक आप जाओगे प्लस 3 करोगे तो 360 आ जाता है और प्लस 5 करोगे तो 360 इज ऑल्सो referred to as 000 students. So 000 plus 005 ऐसे आता है 005 लाइक स्टेप्स में भी कर सकते हो अगर पिज्जा पाई की हम बात करते हैं तो but then we have a formula where you can simply do 357 and right में है तो लोग क्या कर रहे हैं प्लस 8 डिग्रीज क्योंकि राइट है राइट तो बोला राइट है तो ज्यादा ही होगा so you are getting 365 anytime your answer is more than 365 you subtract 360. So you are getting 005. So you get true, which is your track made good. So Suchita, what was happening there? Why do you think you suddenly just did something else? So Confusion क्या हो I रही थी? got confused like QDR, QDM, and But why? That was not required. नहीं तो yes, मैं sir. सबको ही बताता आप करो अभी कर लिया देखो आपके हिसाब से कर लिया फिर क्या मिस्टेक आ रही थी बताओ जैसे आपने किया वैसे कुछ मैंने भी किया है What was the confusion then? You should have still gotten it correct. सर वही ट्रैकिंग मतलब मैंने बनाया 357 रिक्वायर्ड ट्रैक बट मैंने वो 357 को उल्टे डायरेक्शन में ले लिया तो फिर वो ऐसा होगा कि अगर इफ यू सी इट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड देन द राइट साइड वुड बी लेस देन 357 Mhm. if you मुझे नहीं दिख turn रहा है. I flip the cannot plate. see it. No, you send me a diagram. See, Sir, students, diagram. one thing that can happen, हाँ, whatever you have made, send me. QDM अगर मेरे को चाहिए 357, तो वो QDM मुझे कहाँ मिलेगा 357? All aircrafts here, if they are tuned to this ground station in the center that I'm making here in red, then QDM 357 यहाँ आएगा मुझे. यहाँ अगर मैं ये भी अजम्पशन ले रहा हूँ कि मेरे को 357 पे रहना है और मैं अभी कहाँ पे हूँ तो मैं 357 के हिसाब से राइट में हूँ 8 डिग्रीज
तो राइट में 8 डिग्रीज हूं मैं यहाँ पे, तो वो 8 डिग्रीज राइट में कितना जाओगे यहाँ पे, वो कैलकुलेशन भी मुझे मेरे उसी क्यूडीएम से लेनी होगी. सो that might get confusing over here if you are not able to visualize it carefully, but it can still be resolved. If this is your QDM required and your actual QDM, what is that? So here you can actually find out your actual QDM also, but if that was the case, so that becomes a completely different question altogether. But 8 degrees का difference है, तो आप कहाँ पे हो, आप इस तरफ हो, तो आपका QDR क्या है वो देख लो आप. तो अगर आपको इधर का QDR पता है तो यहाँ का QDR मिल जाएगा, छोटा होगा, तो फिर उस हिसाब से आपको QDR मिल जाएगा. सो QDR 357 का QDR आई थिंक इज 177. तो 8 डिग्रीज माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड में हो गया वो विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन आर मेजर्ड क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियल्स वी आर चेकिंग नाउ. तो यहाँ पे राइट लेफ्ट का हमें बहुत ध्यान रखना है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन सी लॉजिक कहाँ पे जा रही है. विथ प्रैक्टिस इट गेट्स देयर. इट विल अपील टू अस मोस्ट ऑफ द टाइम्स. द टाइम व्हेन यू आर फाइंडिंग आर कंफ्यूज्ड, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारा एक चीज मेजर मिसिंग है. वो क्या मिसिंग है हमें इंडिविजुअली वो फाइंड आउट करना होता है. किसी के लिए 2 3 4 चीजें हो सकती है, किसी के लिए एक, किसी के लिए आधी भी हो सकती है, बट मिसिंग तो होता ही है. तो इस इन दिस केस इफ आई से 357 and then that is 177 and minus 8, so I get 169er. 169er plus 180, not sure if I'm doing it right. 349, correct. So QDM here, my actual QDM becomes 349er. So for a TMG required track, they are different. QDM required and actual is different, students. So from different perspective, the same situation could be seen. Aircraft could be in 2 different places. Right now, we're just talking about tracking. We're not talking about any ground VOR station. This is general navigation. This is not instrument flying. So here you don't add anything, QDR, QDM, if your question is just simply based with general nav. But when your question is based with RMI, VOR, NDB, something like that, then you use your QDM, QDR. Such is the way you could differentiate. So why are we doing this mostly in general lab? Because then we don't have the radio navigation system. So we don't have the possibility of using these strategies. A good point. I mean, good thing to discuss something out over and above. I hope you're getting it, students. Any doubts? Suchita, send me a refreshed version of this. Generally, one more thing, Suchita, to you also and everyone, if you're not given any heading, if you're not given anything, but you're just that, if you're just said that aircraft is tracking 357, has to track 360, you assume that track and the heading are the same. Aircraft is going in that direction only. You don't assume whether the station is ahead of you or behind you. You just think you have left departure and you are going to this, you have to go to one direction, you are on one direction, you're heading there only, simple. Always make that assumption in that case. Unless otherwise specified, to and from, inbound, outbound. Okay. Remember this. Jyotsna, any questions? Any doubts? See, I want you all to master this because we are done with 1/60. Exam level, you can easily score 14, 15 marks overall, sometimes 20, sometimes 12. Okay. Question 4. CDI needle is on 4th dot on left. What is its meaning? What is the meaning? My CDI needle is on the 4th dot on left. Karishma, probably you don't know this. We did it yesterday. You keep this question open. When you're completing the session, you might get an answer to this. That time you answer this. If you already know, then you can give me the answer.
नो प्रॉब्लम, अदरवाइज अभी भी शायद सिखाई दूंगा, तो कीप एन ओपन माइंड। बट केशवा ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स। केशवा आंसर तो आपका करेक्ट लग रहा है, बट आंसर पूरा नहीं है, सो इनकरेक्ट भी हो सकता है, बट वेरी गुड, आई एम हैप्पी टू सी दैट। तो पहले ही आंसर चेक कर लेना ज्यादा। So we have a question, is it a 5 dot display or a 4 dot display? Most of the time the generic is a 5 dot display. So this is 5 dot only. 5 dot display CDI on a 5 dot display. Actually 4 ही dots होती है, 5वीं dot तो अंदर होती है circumference के, but yeah. Chaitanya, Charlie Hotel Alpha, cross check your answer. Students, you can also mention any right or left reference. चार्ली ब्रावो अल्फा, आंसर एंड क्वेश्चन नंबर साथ में दे चैट में, ठीक है? आप ऊपर नीचे दिया है, दोनों को कॉपी पेस्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन आंसर, दोनों एक चैट में चाहिए मुझे। ओके प्रेरित। चैतन्य रॉन्ग है, वैल्यू ऑफ डिग्रीज इज रॉन्ग एंड लेफ्ट राइट इज भी रॉन्ग लग रहा है। चैतन्य फोकस करो बच्चा, अभी किया ना मुश्किल से फोकस, करेक्ट आया ना आंसर ट्रायंगुलर एंगल का। अब ये चीज कल की थी, थोड़ा दिमाग से आंसर देने का ट्राई करो। करिश्मा, एयरक्राफ्ट लेफ्ट है राइट है, क्रॉस चेक करो। मुस्कान, गुड जॉब। एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? दो मीनिंग एग्जैक्ट है, बट व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली शोइंग अस स्टूडेंट्स? चैतन्य अब कैसे आया करेक्ट आपको आंसर? पहले क्यों गलत आया? टॉक टू मी अबाउट दिस। Yes, sir. क्या हुआ बताओ तुरंत। लेफ्ट राइट का था तो कंफ्यूजन था। 6 डिग्री कैसे आया? लेफ्ट राइट तो ठीक है, वो तो कर लोगे। 2 6 डिग्री degrees पे per इशू है dot. मुझे। 2 पर डॉट ना, तो तुम कौन से डॉट पे हो? चौथे पे, तो 6 कहाँ से आया? 8 dot. 8 डॉट ठीक है, 6 डॉट कहाँ से आया? जल्दी बताओ, क्या सोच के 6 डॉट लेगा? एक बार बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा, डांटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। Students, the actual indication needle being on the 4 dot on the left means it means the airway is 8 nautical miles on my left. The needle bar shows you that airway. How does it show that airway to you? To and from भी होगा, इनमें से एक ही illuminated होगा, and then you have something called a knob, a rotary knob. This knob is OBS, Omni Bearing Selector. Okay. Omni bearing selector, omni means nothing but checking for radials only. This instrument, you can select the radial you want the instrument to track for you. So if you know your destination VOR, if you know the radial you are supposed to be, you need that radial. Even after tuning, you need that radial. So you first tune to that VOR ground station, you get your radial, set that radial you through this knob. There will be a rotary dial. The aircraft will follow that radial. When the aircraft is not on that radial, it will show you right or left of track. Just like the CDI needle is showing you right now. So the aircraft is of course right of the track by 8 nautical miles, correct? But the instrument is actually reading that the route is 8 nautical miles on the left, which means the aircraft is right of track by 8 nautical miles.
Keep turning left, left, left. So this is where you exactly need your correction angles. If you want to calculate, you calculate correction angle and then fly, or you just keep turning left, 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 slowly control however your thought with respect to your flight. And then you will see by the time the needle comes in the center, you are on track. Then maintain that. If your needle goes there, it means you have drifted left again. So come back. So it's like just alignment. It's like a very boring video game. One of the most first type of video games that were invented were like this. Very simple. One ball, one stick. It is exactly like that. Night flying. If your tuning is correct with respect to ground stations, you just align the ground stations and you are on track. Happy. Great. I don't want to see anything bad weather. You can do whatever you want, like visibility, bad. This is to and from indicator, okay? So it shows you whether the station you're tuned to is behind you or ahead of you. If it's behind you, then a radial is being tracked, that is QDR. If it is ahead of you, then radial is tracked, but what you're flying through is QDM. That's it. So the answer meaning is required track or selected bearing based track. Bearing based track is for us to use. Selected bearing is what generally is used everywhere. Selected bearing is left of us by 8 nautical miles. That is, aircraft is 8 nautical miles right off track. Simple. 1 nautical miles or degrees? Degrees, of course. Nautical miles तो आप निकालोगे 1/60 से. Degrees. Slip of tongue. Thank you, चैतन्य. सब गलत लेके जाते. 68 पे अटक जाते सब लोग. 2 मार्क गलत आते फिर. Degrees, of course, degrees, not nautical miles. Nautical miles 1/60 से आप निकाल लेना as long as the track error angle is 20 degrees or less. वो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है निकालने के लिए हमारे पास अभी तक डायरेक्ट. ये इंस्ट्रूमेंट यूज करना है हमें सिर्फ. लकीली हम सबके पास है, बट कुछ लोग क्लास में कम लाते हैं, या हम सब कभी कभी क्लास में कम 8 लेके डिग्रीज है जाते तो हैं. 60 से मल्टीप्लाई कर देगा नॉटिकल माइल्स में आ जाएगा. नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है ना. वो 1 डिग्री 60 नॉटिकल माइल्स तो सिर्फ ग्रेट सर्कल और इक्वेटर पे होता है. यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं एयर ट्रैफिक रूट्स आर योर ग्रेट सर्कल रूट्स, बट देन ऑफ ट्रैक ग्रेट सर्कल पे नहीं है, हम बोल नहीं सकते ना. तो जरूरी नहीं है. मैक्सिमम आप बोल सकते हो सर 8 डिग्रीज है तो मैक्सिमम 8 into 60 मैं कर सकता हूँ. दैट वे यू विल बी राइट, बट कम होगा. अगर आप ग्रेट सर्कल पे नहीं हो तो कम होगा उससे. ओके सर. वो लॉजिक अच्छा लगा रहे हो. कहीं ना कहीं वो लॉजिक कभी ना कभी काम आएगा. हर जगह नहीं, बट कभी ना कभी काम आ सकता है. गुड चैतन्य, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. Students, 1 degree of angular measurement is only 60 nautical miles in distance on great circles, on the equator, on meridians. All meridians you get that because all meridians are semi-great circles. Longitudes, the great circles that are made by meridians, anti-meridians. वहां पे 1 degree angular difference will give you 60 nautical miles on ground. यहाँ पे एरर एंगल्स, ट्रैक एरर एंगल्स में डिग्री 60 नॉटिकल माइल्स नहीं होता. वो आपको 1/60 से ही निकालना है. ठीक है. अगर बाय फ्लूक समवेयर आपका ग्रेट सर्कल पे ही है रिक्वायर्ड ट्रैक एंड आप इक्वेटर पे ही हो दोनों, लाइक यू आर ऑन इक्वेटर and you are supposed to be on equator, but the change in degree is 10 degrees only, then how off track are you? वहां पे मैं बोल सकता हूँ ब्लाइंडली बोल दो यार ये तो इजी है, 8 डिग्री डिफरेंस है मेरा इक्वेटर पे, तो 60 into 8 कर दे तो उतना ही होगा. मैथमेटिकली कर लो, ट्राई करो. मैथमेटिकली भी सेम आ रहा है तो थ्योरी प्रूव हो जाएगी. थ्योरेटिकली तो आना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. न्यूमेरिकल्स नहीं आते ऐसे, बट ट्रिक क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑफ कोर्स. 480 नॉटिकल माइल्स ऑफ ट्रैक होना कोई छोटी बात नहीं है. उतना ऑफ ट्रैक मतलब कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है.
2 डिग्रीज 1 डिग्री में ऑफकोर्स 60-80 नॉटिकल माइल्स भी इतना ऑफ ट्रैक कोई होता नहीं है जनरली, पॉसिबिलिटी नहीं, उसके पहले ही लोग बच जाते हैं। तो हार्डली 5, 10, 15, 20, 25, तो 25 नॉटिकल माइल वर्थ आप इक्वेटर पे देखोगे तो हाफ डिग्री भी नहीं होता है एरर एंगल। हम तो 5-5 डिग्री एरर एंगल खेल रहे हैं, तो वहां पे 60 डिग्री का वैल्यू जाएगा ही नहीं, बहुत कम होगा वहां पे वेरिएशन, बिकॉज दैट वेरिएशन विल फॉलो द लॉ ऑफ 1/60 ओनली। चलो बहुत टाइम बाद कुछ एक्स्ट्रा सोचने मिल रहा है क्लास में, वेरी गुड। स्टूडेंट्स कीप डिस्कसिंग, एनीथिंग एल्स? वन मोर क्वेश्चन, ओके? Question number 5. On a 4-dot CDI display. तो 4 डॉट हो गया, मतलब सर्कल के बाद 3 ही डॉट्स होंगे। एवरी डॉट और गैप इन बिटवीन विल गिव यू 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. Total you get 10 degree left, 10 degree right. Remember that. Why? Although airway width are 5 degree right, 5 degree, 5 nautical mile right, 5 nautical mile left. So don't get confused there. These are 10 degree, 10 degree. That is nautical mile, nautical mile. Okay. On a 4-dot CDI display, okay, needle is on second dot, aircraft is 50 DME inbound, destination. Find distance of track and whether aircraft on right or left of track. Simple. I've got the answer. Suchita, what's your answer? Needle is on the second dot to the right. Okay, sorry, I forgot to mention that. No wonder you'll not get the answer. Needle is second dot on the right. So whether the aircraft is right or left, and by how many nautical miles? Okay, Jyotsna, your answer, please. Muskan. Very good. Good job, Muskan. But distance of track चाहिए मुझे, distance. Distance in nautical miles. मुस्कान डिग्रीज तो ठीक है, चाहिए डिस्टेंस। आंसर पूरा नहीं है। ज्योत्सना, वेरी गुड। ज्योत्सना, अपने आंसर में डिग्रीज भी मेंशन कर दो, क्योंकि सीडीआई भी डिग्री दे रहा है ना, तो आंसर में मस्त करेक्ट है लेकिन आंसर। वेरी गुड। Karishma, we are on second dot. Every dot gives me 2.5. So first dot will give me 2.5. Second dot will give me 5. Third dot will give me 7.5 and fourth dot will give me 10. This is for a 4 degree. तो सेकेंड डॉट पे मतलब 5 डिग्रीज होगा, 2.5 डिग्रीज नहीं होगा। उस हिसाब से आंसर भेजो। प्रेरित, आर यू डन? चैतन्य, आर यू डन? सर ये 4 डॉट पे कितना होगा, दोबारा बताना। मैक्सिमम 10 डिग्री होता है राइट लेफ्ट।
तो सेकेंड डॉट पे हाफ होगा 10 का. Every dot is 2.5. Students, 4 dot display, every dot gives you 2.5 degree. Okay. Every dot. Five dot display, 2 degree every dot. Total, how much do I get? 2.5 into 4, because 4 dots is equal to 10 degree right or left. Here, how much do I get? 2 into 5. Why 5? Because 5 dot is equal to 10. Students, airway is not 5 degree. Okay. Airway is 5 degree left, so airway is 5 degree right. Aircraft is 5. Karishma, correct your statement. Confusion है. Calm down. Confusion है. चैतन्य, चार्ली ब्रावो अल्फा, क्वेश्चन नंबर एंड आंसर एक लाइन में. भैया कितना मुश्किल है भाई. क्या कर रहे हो? टुकड़ों टुकड़ों में क्यों बेच रहे हो चीजें? प्रेरित, एयरक्राफ्ट इज ओके. एक्यूरेट आंसर नहीं भेजा है, राउंडेड ऑफ भेजा. आई वाज एक्सपेक्टिंग एक्यूरेट बिकॉज सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यार. 0.16 भी कितना वैरी करेगा यार, कम ऑन. चलो, करेक्ट आंसर स्टूडेंट, वेरी सिंपल. 2.5, 2.5, 2 dot on the second dot means I'm 5 degree. The needle is right means aircraft is left. 5 degree. I want to find distance of this is opposite. What is my DME showing me? DME is simply showing me 50 nautical miles inbound into 60. Simple. .16 nautical miles left of track. 5 degrees. Okay. ठीक है, चलो. Any questions? Everybody got it? Done. 1/60, everyone. Chaitanya, Jyotsna, Muskan, Suchita, Chaitanya, Karishma, प्रेरित. कोई डाउट्स नहीं है? अभी एक और चीज होगी. ILS. ILS का ग्लाइड स्लोप का एक इंडिकेटर होता है. There is an indicator that shows you your degree with respect to the glide slope. Sushita, submit your answers. Okay, everyone submit your answers. हो गया है तो अच्छा है. Just like this dot display that you have, 2 degree or 2.5 degree per dot, depending upon 4 dot display or 5 dot display, your glide slope also has a system where the maximum is quite well below 1 degree only. So point में जाता है वो variation. कभी कभी आपको ROD के sums पूछे जाएंगे. Safe height above and below glide slope. That would be asked to you with respect to the dots or the needle. What is that needle and what is that instrument? We'll be introducing that in our next live lecture. But I will also be giving you a practice set of questions as a surprise. Maybe today, maybe tomorrow, maybe day after, based upon 1/60. Maybe 10 questions, 20 questions, 50 questions. That will include VOR, that will include general lab, that will include TrackMate Good, that will include ROD, safe height. Probably something out of the box also. So be prepared, okay? In general, that would comprise up to 40% of your different general navigation equations. That being said, mastering instrument is not that difficult if you look at the whole picture. For you to be prepared for the exams, you need to give me a list of your doubts that are still yet to be resolved, are generated now, or that you have just forgotten everything. Whatever your status is, whatever separates you from the thought of being 100% confident,
is something that I need to be aware about. And your tentative exam dates for navigation, whether you fill the forms or whether you're planning, if yes, then which month, what approx date. So I know how much time you have individually with respect to your next exam. All this information I need through a text, regular. Couple of students are giving me regular updates at the start of the session, something that I've advised in the first lecture. I'm very happy. But other students are not doing that. So that is something I don't like. जो भेज रहे हैं मैं देख रहा हूँ, आपको लिए नहीं है ये मैसेज. तो जो नहीं भेज रही हूँ उनके लिए है. सर मैंने 2 महीने पहले भेजा था, सर मैंने 2 दिन पहले भेजा था, बार बार भेजो क्या? हाँ, बार बार भेजो. 2 क्लिक ही तो करने हैं आपको. कौन सा पहाड़ तोड़वा रहा हूँ आपसे? भेजना है, मांग रहे हैं तो भेजना. सर एक बार भेजा था ना, आपको नहीं समझता क्या? नहीं समझता, मेरे को बार बार चाहिए. गजनी चल रहा है मेरा, एवरीडे भूल जाता हूँ मैं. जो भी है आपको देना है. उस हिसाब से मैं आपको लाइव लेक्चर में ज्यादा टॉपिक्स दे सकता हूँ. लाइव लेक्चर के बाद थोड़ा बहुत और टाइम स्पेंड कर सकते हैं. बट आप नहीं बताओगे, सब बोलते रहोगे सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, बढ़िया नहीं चल रहा है, बाद में समय नहीं मिलेगा. बाद में भले मेरे साथ 12 घंटे बैठ लो, कुछ दिमाग में नहीं जाएगा एक साथ. That is a limitation of navigation as a subject. I've tried that with many students. अभी भी बोल रहा हूँ, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान रखो तो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान रहेगा. बाकी बताओ, कुछ इश्यूज है? रेज योर हैंड वन बाय वन. मेरे को यहाँ भेज दो ना, व्हाट्सएप पे भेज दो मैसेजेस अपने प्लीज. ठीक है. टेंटेटिव एक्सपेक्टेड डेट क्या है ज्योत्सना? लिखो. चैतन्य तुम्हारा मेरे को टेंटेटिव चाहिए, चार्ली होटल अल्फा. एंड प्रेरित, करिश्मा, कंप्यूटर नंबर स्टेटस क्या है? ज्योत्सना तुम्हारा अपडेट आ गया है. चैतन्य तुम्हारा मुझे ऑलमोस्ट पता है, बस बताओ टेंटेटिव डेट. तुम्हें क्या लग रहा है कब दे रहे हो? दूसरे चैतन्य आपका मुझे पता है, कोई इश्यू नहीं है. अमन से दूसरा, चार्ली ब्रावो अल्फा. सुचिता, ऑफ कोर्स योर स्टेटस आई एम अवेयर. लिख दो. मुस्कान, योर स्टेटस आई एम अवेयर. बस अप्रोक्सीमेट तुम्हें क्या लग रहा है वो लिख दो. विष्णुप्रिया इज नॉट हियर, नुकुल इज नॉट हियर. चाहिए मेरे को सबके मैसेजेस along with whatever doubts you have with respect to your schedule. uh, uh, we'll keep the same time, 4:30 for tomorrow, as a soft update for nav. We'll follow the same process. Okay, 4:30. If not, 5 o'clock live will begin. I think tomorrow I don't see any issue beginning, but we are keeping that. I was not supposed to take a lecture tomorrow, but I am taking a lecture tomorrow because I see that you all are doing good. And आज क्योंकि हमने देखा जाए तो 2-3 बच्चों पे ज्यादा ड्रिल किया है, आई एम थिंकिंग दैट टुमारो वी गेट टू ड्रिल अदर्स आल्सो इफ नीड बी. बट यस, be ready for the test anytime. Probably tomorrow in the class time you would be given the surprise test. You never know. मुझे चाहिए 75-80. मेरे लिए नहीं चाहिए. मेरे लिए तुम बोलते तो मैं बोलता मुझे तो 100/100 चाहिए. So no matter what your target is, you keep a buffer of 10%. If your target is 70, keep 80. 80 के हिसाब से प्रिपेयर कर लो 1/60. मैंने बहुत नोट्स दिए हैं, आपके पास नहीं है ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक्स, रेफर कर लो डायरेक्टली. जितना हमने पढ़ाया उतना ही आपको पढ़ना है, आप देख के समझ जाओगे. अभी बच्चे नहीं रहे हो, राइट? पर्सनल यूज के लिए आप सबके पास है ही नोट्स. कुछ नहीं है मुझे भेजो, मैंने चैप्टर वाइज भी शायद बना रखे हैं, मैं भेज देता हूँ जो भी अच्छा टेक्स्ट है. कुछ भी चाहिए मुझे बताओ. और मैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, सपोज आप बोल रहे हो सर मुझे नोट्स दो, और मैं बोल रहा हूँ लो मैंने दे रहा हूँ, इसमें से ये पेज निकाल लो खुद से, तो खुद से करना है. कुछ बच्चे नहीं सर नहीं भैया मैं नहीं करना. क्यों? आई एम लेजी, आई एम टायर्ड. वो नहीं चलेगा अभी, ठीक है? अरे आपसे नहीं हो रहा है सेल्फ स्टडी, तो फिर क्या कर सकते हैं बताओ? तुम बताना फिर क्या कर सकता है. मैं बताऊंगा वो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है. फिर आजा की बात यही आ जाएगी, तो करो मेरे साथ फिर बैठ बैठ के, यहाँ ही करना है हमें. ठीक है? ये दिस शुड बी अ टाइम 4:30 to 6:30, 5 to 6, 4:30 to 5:30, 4:30 to 7, 5 to 7, 7:30 तक. फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाइम बना लो, ये मेरा नैब मास्टरी का टाइम है. मैं मिल रहा हूँ आपको लाइव, आप उसका पूरा फायदा उठा लो, है ना? फटाफट करना. आपको लग रहा होगा एक टॉपिक 4 लेक्चर, इसका एप्लीकेशन देखना. लॉजिक यूज करोगे तो ही टेस्ट पेपर सॉल्व कर पाओगे. तो तब तक प्रैक्टिस कर लो. बुक्स खुली हैं, टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं. कहीं भी कंफ्यूजन है मेरे से चैट पे बात करते रहो.
कॉल भी कर सकते हैं. If miss, then of course I'll call back. But कॉल का जाने ही दो. Text based discussions are better, I think, for everyone right now. Of course, डाउट रेजोल्यूशन तो वन ऑन वन ही लाइव पे हो रहा है, तो क्या दिक्कत है फिर. ठीक है. एनी क्वेश्चंस बिफोर आई लीव? एनीथिंग टू डू विद 1/60? सारे एप्लीकेशंस कवर हो गए हैं. एक क्वेश्चन बचा है जो ग्लाइड स्लोप के इंस्ट्रूमेंट के नीडल बार के बारे में बात करता है. उससे रिलेटेड कितना डिग्री अप एंड डाउन है वो आपके ग्लाइड स्लोप से माइनस प्लस होके आपका हाइट निकल रहा है. वो हम करेंगे कभी तो, या डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिया जाएगा. एग्जाम में अभी टेस्ट में जो मैं दूंगा उसमें अगर दिया जाएगा तो एक्सप्लेन करके दिया जाएगा. तो प्लीज अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन, आपको आंसर आ जाएगा. बस आपको वैल्यूज पता करनी है जो आपको मिल जाएगी. ठीक है. That sums up your major chunk of 1/60 students. Major chunk with respect to exams. This connected with radio nav instruments, if you are able to solve the test questions, you are good. If not, you need to practice a little bit. And make sure you send me a list of doubts, topics to do, topics that you don't know, every day end of the session. Okay? That's all. Chalo. I'll take your leave, students. I'll see you tomorrow. All right? Sir. Well done on today's tests, everyone. Make sure you remember the feedback. छोटे छोटे एरर्स हैं बट ये क्यूरेटेड क्वेश्चंस हैं. यहाँ पे आपने फिक्स कर लिया, बहुत अच्छे से आपको सब समझ आएगा. सो प्लीज बी केयरफुल. ओके, चलो यू ऑल कैन लीव. आई एम वेटिंग. मिलता हूँ आप लोग को कल में. ठीक है. स्टैंड बाय फॉर द अदर थिंग्स ऑन द स्केड्यूल. इफ यू गेट, फॉलो दैट. नाव इज फिक्स्ड. रिमेंबर दैट फॉर टुमारो. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम एवरीवन. Bye, sir. टेक केयर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम.